एवरीवन, वेलकम टू बायजूस एग्जाम प्रेप गेट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम पढ़ाते हैं आपको सिविल, मैकेनिकल और एक्सी ब्रांच के लिए. सो आई होप यू ऑल आर डूइंग सुपर फाइन एंड माय ऑडियो एंड वीडियो इज परफेक्टली क्लियर टू ऑल ऑफ यू. You can please share this session with your friends so that everybody can enjoy this session and can solve the questions with us, right? So I will quickly start this session with a very small introduction. So my name is Joshit Singh and I have 4 years of teaching experience, MTech from IIT Roorkee. Specialization of MTech is in hydraulic engineering. Apart from this, guys, there is one ESE Mains 2023 batch going on in BYJU'S exam prep. So if you are interested, you can join this batch also, right? And yeah, this is the startup series. This session is the part of startup series where we are going to teach you the concept as well as the numerical for GATE and Engineering Services Examination 2024 on YouTube. मेरी आवाज आप तक आ रही है? जरा एक बार मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में कंफर्म कर दीजिए. एंड स्टार्ट करते हैं हम. इस सीरीज को एंजॉय करने के लिए आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल को, जहां पे आपको मिलेगा सटीक एकदम बेहतरीन कंटेंट. स्टार्ट करता हूं मैं क्लास. सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आएगा और देखते हैं सर आप में से कितने लोग उसका सही जवाब देंगे. लेट्स सी दैट. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन इज. In a two-dimensional bend, the radii of inner other wall, okay, inner and outer wall होना चाहिए था, outer wall are 2 meter and 3 meter respectively. If velocity at inner wall is 4 meter per second, then velocity at the outer wall will be what? अब यहाँ पे we have to make sure what type of vortex flow it is. So in this case, we basically have, because no external torque is included or coming into the picture, that basically refers that this is a free vortex flow. And for free vortex motion, we know that the tangential velocity would be inversely proportional to the radii, or you can say radius. So from here, we can also say that your velocity into the radius remain constant, or you can also say v1 r1 is equals to v2 r2. You have the value of r1 and r2, you have the value of v1, you need to find out the value of v2 basically. So let's say the velocity v1 is 4, radius is 2, equals to velocity we don't know, radius is 3. So from here we get the answer as how much you will be getting from here everybody? कितना आ जाएगा फटाफट से बताइए. This would be 8 by 3, right? You can calculate this. 8 by 3 meter per second. किस किसका आ गया सेम आंसर? How many of you got the same answer? Please let me know in the comment box. चलिए, let's move to the next question. बड़ा आसान सवाल है अगला सवाल. Next question is a very simple question but a very basic one. So let's see सबसे पहले इसका कौन जवाब देगा कमेंट बॉक्स में भी, और अगर आप रिकॉर्डिंग में देख रहे हो तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हो पॉज करके वीडियो को. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. बड़ा आसान सा सवाल, फटाक से जवाब आना चाहिए. इन फ्लूइड मैकेनिक्स द नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हाट? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, या फिर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन? क्विकली एवरीबडी हैज टू आंसर दिस क्वेश्चन. दिस इज वन ऑफ द बेसिक question from fluid mechanics that should be known by all the students, be it civil or mechanical or ESE branch. ठीक है sir. So everything starts from the basic law, that is law of net force. अभी what is this law of net force? What is the basic or fundamental name of this particular law? And this is nothing but, guys, this is your Newton's सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. क्या बोला मैं? न्यूटन का दूसरा वाला जो लॉ था, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है. दैट गिव्स अस द नावियर-स्टोक्स इक्वेशन. इट गिव्स अस द रेनॉल्ड्स इक्वेशन, रेनॉल्ड्स मोशन इक्वेशन. इट गिव्स अस द नावियर-स्टोक्स इक्वेशन. इट गिव्स अस द आयलर इक्वेशन एज वेल. ठीक है, सारी इक्वेशंस हमें यहीं से मिलती है. एंड फ्रॉम आयलर वी गेट द बर्नौलीज इक्वेशन. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. Fluid is flowing in a horizontal pipe in which at a particular point piezometer
measures a static pressure of 250 kilopascal and pitot tube measures stagnation pressure of 280 kilopascal. If the fluid is water, then find the velocity of water. चलिए सर, आपके पास स्टैटिक और स्टैग्नेशन दोनों की जानकारी बखूबी दी गई है, तो फटाक से जवाब इसका आना चाहिए आप लोग के पास। तो मैं यहां मेंशन भी करता हूं, स्टैटिक आपको मेंशन हो रखा है, कितना है 250 किलो पास्कल ना, ठीक है। मेजर्स द प्रेशर 250, सही है। एंड व्हाट अबाउट द स्टैग्नेशन, इट इज गिवन टू अस एज 280 किलो पास्कल। कम ऑन एवरीवन, फटाक से ट्राई करिए इसको जवाब देने का। वेलोसिटी निकालनी है आपको सर यहां पे। क्विक 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 एवरीवन, जल्दी जल्दी बताइए सर। देखो आसान भाषा में, इफ यू रिमेंबर दिस इक्वेशन दैट वी गेट इज नथिंग बट इट इज योर स्टैग्नेशन प्रेशर बाय रो प्लस, नॉट प्लस, इट वुड बी, वेट इसको हटाता हूं मैं, अरे कहां गया इरेजर, लीव इट। सो स्टैग्नेशन pressure by rho should be equals to your static pressure by rho plus v square by 2, ठीक है। g बेसिकली हमने कैंसिल कर दिया दोनों तरफ से, एक ही बात हो गई, राइट। अभी वाटर है ना, सो वी रो इज 1000 ओनली, राइट। रो का वैल्यू क्या हुआ, 1000 ओनली। सो लेट्स गेट द वैल्यू एवरीबॉडी। So this is 250 10 raised to the power, no, this is 280 I suppose, this is 280 10 raised to the power 3. Why? Because किलो पास्कल दिया है ना यार हमको, तो हमें नहीं लेना किलो पास्कल में, हम पास्कल में ही रखेंगे सब कुछ। This is 250 into 10 raised to the power 3 by 1000 plus velocity चाहिए by 2। इसको सॉल्व करके eventually what you are going to get is 7.75 मीटर पर सेकेंड। समय का आपका जो वक्त है वो बचाते हुए, समय बचाते हुए कैलकुलेशन में घर से करके लाया हूं, जिससे कि आपको कैलकुलेशन में टाइम ना वेस्ट हो। वी आर हियर टू लर्न द कॉन्सेप्ट, जिससे कि ज्यादा टाइम वी कैन गिव टू मोर क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, लेट्स से व्हाट द क्वेश्चन सेज। Two pipe of diameter 5 centimeter and 10 centimeter are connected in series very well, such that flow take place from smaller dia pipe to larger dia. So basically the case is of expansion. Velocity of flow is 5 centimeter, okay, is okay, in 5 centimeter it is 4 meter per second. Find the head loss due to abrupt change of cross section, consider laminar flow। ठीक है सर, क्या बात है, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमारा जो डाया है एक पाइप का, दैट इज 5 सेंटीमीटर एंड continuously there is another pipe connected and that the pipe dia is 10 centimeter, उसका डाया दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर का। velocity is also given to me in this pipe which is 4 meter per second but no velocity is given for d2। अभी d2 का कैसे आएगा, d2 के लिए it is very simple, we are going to use the continuity equation 1D वाला, right, with study और अपना इरोटेशनल वाला जो केस होगा, इनकम्प्रेसिबल वाला जो केस होगा, दैट वी आर गोइंग टू यूज, दैट इज a1 v1 is equals to a2 v2। ठीक है, इधर से वी विल गेट द वैल्यू ऑफ v2। v2 वुड बी a1 by a2 into v1। a1 will be pi by 4 d square, a2 will be pi by 4 d square into 4। इधर से दिस इज गॉन, दिस इज गॉन, 25 और ये रहा 100, बट ये तो 1 ही हो गया सर सीधा सीधा। सो 1 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी इन द सेकेंड पाइप। दूसरा पाइप जो है 10 सेंटीमीटर डाया पाइप, इट इज हैविंग द वेलोसिटी एज 1 मीटर पर सेकेंड। तो अभी हेड लॉस निकालना है आपको। सो हेड लॉस इज गोइंग टू बी v1 माइनस v2 होल स्क्वायर बाय 2g, सिंपल सॉर्टेड, एंड इट इज हाउ मच, 4 minus 1 square by 2 into 9.81। when you solve this you get the answer as 0.459। तो बोले तो अपना आंसर would be A only। A is the right answer sir। Any doubts anybody?
इजी सिंपल, कोई शक किसी को? बहुत बढ़िया, इससे अच्छा और क्या ही होगा। अगला सवाल करते हैं सर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, चलो ये तो भाई ऐसा सवाल है दैट यू ऑलरेडी नो, so I suppose you won't make any mistake. For a fluid flowing in pipeline, static and stagnation pressure is measured, and the height of fluid in piezometer and pitot are given to you as 2 meter and 2.20. Calculate the velocity. Okay, density is given, g is given. In that case, we were having pressure. Here we have the pressure head. So please accordingly try to answer. So static pressure head is how much? सर स्टैटिक कितना है? स्टैटिक आपका कौन मेजर करेगा? पीजो 2 मीटर, और अपना स्टैग्नेशन पिटॉट 2.20। रेस्ट क्या गया है? ठीक है, डेंसिटी फ्लूइड में दिया हुआ है दैट इज 4000 kg पर मीटर क्यूब इज द वैल्यू ऑफ द डेंसिटी, और रिमेंबर द जी वैल्यू हैज टू बी कंसीडर्ड एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है सर, ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई है ना। करिए सॉल्व करने की इसकी कोशिश करिए। यहां से आप इसको, द सेम क्वेश्चन कैन बी सॉल्व एज वी डिड अर्लियर ओनली। यू कैन फाइंड आउट द प्रेशर लाइक दिस ऑल्सो, कि भाई ठीक है स्टैग्नेशन प्रेशर दिस मच और द स्टैटिक प्रेशर इज दिस मच, or directly you can go with the head form only, right, where you will be having v square by 2g and 2 equals to 2 point, yeah, so please करिए इसको solve फटाक से and let me know how much you are getting. ये तो direct solve होने वाला सवाल है. Try to answer this quickly everyone. Stagnation is how much? 2.20. Static is 2.2 to 20. Come on everyone. How much? हाँ सही है, 2 मीटर पर सेकेंड. परफेक्ट. ठीक है. If you want you can directly solve it, or if you want you can go from that way also, जहाँ पे प्रेशर निकालना है. I'll show you. This is what rho g h. So if you want to get the static pressure, rho is how much? Rho is 4000. G has to be considered as 10 and static is 2. So from here it will be 8000 Pascal. ठीक है. स्टैग्नेशन भी सिमिलर वे में आएगा, बट इट वुड बी हाउ मच? इट वुड बी आपका 88,000 फोर, हाँ इधर 80,000 होगा, नॉट 8,000. दिस वुड बी 88,000. Then similar way, the equation I have shown you here also you can see in this question. This is how you are going to solve it. 2 meter per second would be the correct answer. Superb, amazing. Moving on to the next question. अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है. An experiment is conducted with a fluid of density 1 kg per meter cube at 10 meter per second velocity. The free stream static pressure is 100 kilopascal and the local static pressure is 101 kilopascal. What is the pressure coefficient at the location? Pressure coefficient पूछा गया है सर आपसे. मैं आपको यहां पे लिख के देता हूं so that you can note it down also. P naught by half v square. वैल्यूज पुट करिए और आंसर लेके जाइए फटाफट से. दिस इज हाउ मच? 101 माइनस 100, बट किलो है तो पावर बाहर, 10 की पावर 3, हाफ डेंसिटी 1, वेलोसिटी 10 स्क्वायर. 20 आ जाएगा सर आपका आंसर. हैव यू गॉट 20? सिंपल कैलकुलेशन. अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, फटाक से जवाब आना चाहिए. So this is regarding Navier-Stokes equation. Laminar unidirectional flow between stationary parallel plate. Yes, laminar unidirectional flow between parallel plate having no relative motion. Correct है. Laminar flow in circuit pipe. Correct है.
laminar flow between concentric rotating cylinder, ये गड़बड़ हो गया। So 1, 2 and 3, मतलब ऑप्शन ए अपना बिल्कुल परफेक्ट एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a concentric shaft bearing arrangement the lubricant flows in 2 mm gap। ये देखो, ये क्वेश्चन लाया हूं मैं पहले वाले चैप्टर से, तो so that you can answer this in the comment box। ये आपका comment box वाला सवाल है। Please take your time and put your answer in the comment box of the video। You can consider this question as your homework। देते हैं होमवर्क भाई, गेट की उसमें भी देते हैं, स्कूल टाइम तक तो था ही, अभी भी होमवर्क चलता है साथ में, ठीक है सर। So that is it. That's what I had for you in this short crisp video. I'll see you next time in some other video. Till then, take care of yourself, take care of your family. Have a nice day. Good night. Bye bye.